हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये ब्यूटीफुल सा स्टिच बनाना सीखेंगे। विल मेक दिस स्टिच टुडे। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड इट वर्क्स अप रियली फास्ट एंड यू कैन मेक लॉट ऑफ थिंग्स यूजिंग दिस स्टिच लाइक ब्लैंकेट्स, टेबल मैट्स, पर्स, shawl and much more. So let's get started. So we'll start by making a slip knot first. So सबसे पहले हम slip knot बनाएंगे and now we have to chain in multiples of 19. हमें multiples of 19 में हमें चेन करना है। तो आप जो भी बना रहे हैं उस हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जितनी भी चेन्स लेंगे वो मल्टीपल ऑफ 19 होना चाहिए, मतलब 19 के टेबल में आना चाहिए। सो मैं यहाँ पे पहले 57 चेन्स बनाऊँगी। 19 3 57, सो मैं 57 चेन्स बनाऊंगी पहले। सो आई विल बी मेकिंग 57 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने यहाँ पे 57 चेन्स बना लिए हैं। Now I have made 57 chains and you can chain according to whatever you're making, but make sure that this should be a multiple of 19. Okay, now we'll add 7 more chains to this. अब ये जब हमने multiples of 19 के हिसाब से अपनी chain बना ली है, उसके बाद हमने 7 और chains add करनी है। तो हम 7 और chains बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 and 7. Now we can start making our pattern. So now we'll skip these 4 chains and we'll go into the 5th chain and make a treble crochet stitch. ये जो 4 चेन्स है इसको छोड़ के 5th चेन में हम एक ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ट्रेबल क्रोशे स्टिच के लिए हमें 2 बार yarn over करना पड़ेगा। yarn over twice, go into the 5th stitch from the hook, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2 and yarn over, pull through 2. So this is our treble crochet stitch. Then again in the next chain we'll make one more treble crochet stitch. So yarn over twice, फिर से हम एक treble crochet stitch बनाएंगे next chain में। Now in the next chain we have to make 5 treble crochet stitch. तो ये इसमें जो next chain होगी उसमें हम 5 treble crochet stitches बनाएंगे। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4 and 5 in the same chain. Okay, 5 treble crochet stitches in the same chain. तो मैंने 5 treble crochet stitches इसी same chain में बना लिए। Now जो next chain है, now in the next chain we'll make 1 treble crochet stitch. तो अब यहाँ पे हम एक treble crochet stitch बनाएंगे in the next chain. So 1 treble crochet stitch in the next chain. Now skip the next chain and go into the next. एक chain को हम skip करेंगे and we'll go into the next और एक treble crochet stitch बनाएंगे. So we'll make 1 treble crochet stitch in the next chain by skipping 1. So we'll skip 1 chain and go into the next and make a treble crochet stitch. Again we'll skip the next, go into the next. So we एक skip करेंगे और next वाले में treble crochet stitch बनाएंगे. So we are skipping 1 chain and we are working in the next. Again we'll skip 1, go into the next, फिर से एक skip करेंगे, next वाले में जाएंगे और एक treble crochet stitch बनाएंगे। इसी तरीके से हमने 9 टाइम्स करना है। तो हमारे पास ये 9 treble crochet stitches ऐसे होने चाहिए एक एक skip करने के बाद जैसे हम करें। So again we'll skip 1, go into the next, make a treble crochet stitch, then again skip the next, go into the next, make a treble crochet stitch, again skip 1 chain, go into the next chain and make a treble crochet stitch. Okay, I'll just count how many I have. These were the 5 that we did together, and from here we started 1 2 3 4 5 6 7. We have 7, so we have to make 2 more. So we'll skip 1 chain, go into the next, make a treble, again we'll skip 1 chain, go into the next and make a treble crochet stitch. तो हमने ऐसे 9 trebles बना लिए हैं। ये हमारे
5 ट्रेबल्स थे जो हमने एक ही चेन में बनाए. उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लिए हैं. और जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा नेक्स्ट में ही होता है, वो स्किप करके नहीं होता. उसके बाद एक एक चेन स्किप करके हम करते जाएंगे. सो द फर्स्ट दैट वी मेक आफ्टर द 5 treble shell, that should be just next in the next chain, and after that we start skipping one and working in the next. Now we don't have to skip, we will just go into the next chain here, and we'll make 5 treble crochet stitches shell as we did here. जैसे हमने पहले शेल बनाया था 5 ट्रेबल क्रोशे स्टिचेस का, वैसे ही हम अब एकदम नेक्स्ट में बनाएंगे. अब हमने स्किप नहीं करना, तो एकदम नेक्स्ट में जाएंगे और 5 ट्रेबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे इसमें. 1 2 3 4 and 5. Now in the next stitch we have to make same 5 treble shell like we did here. जैसे हमने यहाँ पे ये शेल बनाया, एकदम नेक्स्ट वाली चेन में ऐसे ही सेम हम 5 treble crochet stitches के साथ शेल बनाएंगे. So in the next chain here again we have to make 5 treble crochet stitches in the same chain. 2 3 4 and 5. So here we have 2 shells. At the beginning and at the end we'll have 1 shell, and in the middle wherever the 9 trebles end we have to make 2 shells. So 5 in one chain and 5 in the other chain, next chain. Now without skipping we'll go into the next chain and we'll make a treble crochet stitch. अब हम skip नहीं करेंगे कोई भी chain, एकदम जो next बाजू वाली chain है उसमें हम एक treble crochet stitch बनाएंगे. Now we'll skip one chain, go into the next and make a treble. तो एक chain को हम skip कर रहे हैं और next chain में हम एक treble crochet stitch बना रहे हैं. फिर से हम एक chain को skip करेंगे, next chain में जाएंगे और treble crochet stitch बनाएंगे. Again we'll skip one chain, go into the next, make a treble. Similarly like we did here, same way we have to do here. So we should have 9 trebles. So we'll skip one, go into the next, make a treble. Then again we'll skip the next chain, we'll go into the next, we'll skip one chain and we'll go into the next and make a treble. बस हमने एक एक चेन को स्किप करते जाना है और उसकी नेक्स्ट वाली चेन में हम एक एक ट्रेबल करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास 9 ट्रेबल स्टिचेस ना हो शेल के बाद. तो फिर से हम एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में जाएंगे और एक ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. सब देख लेते हैं हमारे पास अब कितनी है. ये हमारे शेल, यहाँ पे हमारे शेल एंड हो रहे हैं. तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 है. हमने 2 और बनाने हैं. वी शुड मेक 2 मोर. सो वील स्किप वन, गो इनटू द नेक्स्ट, मेक अ ट्रेबल. देन अगेन वील स्किप वन चेन, गो इनटू द नेक्स्ट एंड मेक वन मोर ट्रेबल हियर. नाउ वी हैव अ टोटल ऑफ 9 ट्रेबल्स. अब हमारे पास 9 ट्रेबल्स हो गए हैं शेल के बाद. तो अब हम नेक्स्ट चेन में शेल बनाएंगे और अब हमने 2 शेल्स बनाने हैं, एक नेक्स्ट चेन में और एक उसके नेक्स्ट चेन में, बिकॉज हम अभी लास्ट तक नहीं पहुंचे ना, मिडिल में. सो नाउ इन द नेक्स्ट चेन वील मेक 5 treble crochet stitches. 1 2 3 4 and 5. Now in the next chain again we'll make 5 treble crochet stitches. नेक्स्ट चेन में फिर से हम 5 treble crochet stitches का शेल बनाएंगे. 2
3 4 and 5. Now in the next chain we'll make one treble. Now skip one, go into the next, make a treble. ये हमारा second treble हो गया. Then again skip one chain, go into the next. This is the third treble. Then again skip one chain, go into the next. Fourth treble. फिर से एक skip करेंगे. एक skip करेंगे, next में जाएंगे. ये हो गया हमारा fifth treble. Again skip one chain, go into the next. Sixth treble. Then again skip one chain, go into the next. Seventh treble. Then again skip one chain, go into the next. Eighth treble. Skip one chain, go into the next. Ninth treble. So this is our 9th treble here. Now in the next chain we'll be making a shell. So यहाँ पे हम एक शेल बनाएंगे. ये हमारा लास्ट का पार्ट है. अब देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास एक शेल था, मिडिल में हमारे पास दो शेल्स हैं और लास्ट में हमारे पास एक ही शेल. यहाँ पे एक ही शेल बनाना है. सो at the beginning and at the end we have to make one shell of the cluster of 5 trebles. In the middle we have 2 shells. So here we have reached the end. So we'll be making one shell. हम यहाँ पे एक ही shell बनाएंगे. तो 5 treble crochet stitches एक ही chain में करेंगे हम. 2 3 4 and 5. अब ये जो लास्ट चेन है इसमें हम एक ट्रेबल बनाएंगे और इसी में एक और ट्रेबल बनाएंगे. सो 2 ट्रेबल्स एट द एंड. तो ये हमारा पहला जो रो है ये कंप्लीट हो गई. सो आवर फर्स्ट रो इज कंप्लीटेड. नाउ आई शो यू व्हाट टू डू इन द सेकंड रो. Now to begin with our row 2, we'll chain 1 and turn our work. अब हम row 2 पे chain 1 करेंगे, अपना work हम turn कर लेंगे. Now we have to make front post single crochet stitch in each of the following stitches here. हमें हर एक stitches में, हर एक जितनी भी stitch है, हर एक stitch में एक एक front post single crochet stitch करना है. So front post single crochet stitch के लिए we'll go like this. Behind the stitch we'll yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2. Then again we'll go under the next stitch, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2. So we have to just keep doing one front post single crochet stitch in each of the following stitches. हर एक stitch में हमें front post single crochet stitch करना है. जो हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे इसी से वो जो 3D पैटर्न है वो शो होगा. दिस हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द 3D पैटर्न. सो वी हैव टू जस्ट कीप डूइंग वन फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टिचेस. See, as you can see, this is how it will look. So and the first and the second row is the repeat for the whole pattern. You have to just keep repeating row 1 and row 2 unless you get the desired length. आपको बस row 1 और row 2 को repeat करते जाना है जब तक कि आप जितना आपकी desired length है तब तक ना पहुँचे, तब तक आपने बस row 1 और row 2 को repeat करते जाना है. बहुत ही सुंदर लगता है. इससे आप ब्लैंकेट्स बना सकते हो, शॉल्स बना सकते हो, बैग बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. ऐसे टेबल मैट्स बन जाएंगे, बहुत सुंदर लगेंगे. सोफ़ा की कवर साइड पे जो आर्म रेस्ट पे रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेंगे. बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी भी आप चेन्स लेंगे वो मल्टीपल ऑफ 19 होना चाहिए. मतलब आप जैसे 19 + 19 + 19 ऐसे करके भी कर सकते हैं. और लास्ट में
7 चेन्स एक्स्ट्रा लेनी है. जितना भी आपका टोटल जो फाउंडेशन चेन होगी उससे आपने 7 चेन्स एक्स्ट्रा लेनी है. So we'll keep on doing one front post single crochet stitch here, and I'll meet you when I reach the end. So here I've almost reached the end. मैं अपने end पे पहुँच गई हूँ and 2 front post single crochet stitches are left. I mean 2 stitches are left. Now in the last stitch which is left, we will not do a front post. We'll just go into the stitch like this and we'll make a single crochet stitch. Okay. अब ये हमने ये रो 2 कंप्लीट कर ली है. नाउ विल चेन 4 एंड टर्न आवर वर्क 1 2 3 4 और इसको हम टर्न कर लेंगे. Now as we did our row 1, we have to just keep repeating that. Now make sure ये जो है ये यहाँ पे नहीं वर्क करना. हमने जो अभी स्टिच किया है, ये वाले सिंगल क्रोशे स्टिचेस जो किए हैं हमने इसमें वर्क करना है. ठीक है. नाउ विल गो इनटू द नेक्स्ट. विल मेक अ ट्रेबल क्रोशे स्टिच. नेक्स्ट वाली स्टिच में जाएंगे और ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. देन विल गो इनटू द नेक्स्ट एंड विल मेक अ ट्रेबल अगेन. देन विल गो इनटू द नेक्स्ट एंड विल मेक अ शेल. तो शेल में क्या करते हैं, हम 5 ट्रेबल्स बनाते हैं. तो हम इस स्टिच में 5 ट्रेबल्स बनाएंगे. 1 2 3 4 and 5. And this is the beginning of the row, so we have to make only one shell. अब ये एक बिगिनिंग है तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ही शेल बनाएंगे. नाउ इन द नेक्स्ट स्टिच वील मेक अ ट्रेबल क्रोशे स्टिच. अभी जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम एक ट्रेबल बनाएंगे. फिर हम एक स्किप करेंगे स्टिच और नेक्स्ट वाली में एक ट्रेबल बनाएंगे. ये हो गया 2. देन अगेन वील स्किप 1, गो इनटू द नेक्स्ट, मेक अ ट्रेबल 3. फिर से एक स्किप करेंगे, स्किप 1, गो इनटू द नेक्स्ट, मेक अ ट्रेबल 4. देन अगेन स्किप 1, गो इनटू द नेक्स्ट, 5 ट्रेबल. देन स्किप 1, गो इनटू द नेक्स्ट, 6th ट्रेबल. Skip 1, go into the next, 7th treble. Skip 1, go into the next, 8th treble. Skip 1, go into the next, 9th treble. And now in the next stitch we'll make a shell. अभी जो next stitch है हम इसमें treble का shell बनाएंगे, like 5 trebles in the same stitch. 5 trebles इसी same stitch में. 2 3 4 5. अब next stitch में एक और shell बनाएंगे. We'll make one more shell in the next stitch. So 5 trebles. 1 2 3 4 and 5. Now again similarly like we did here, this portion we'll do it here. इसी सेम तरीके से हम यहाँ पे करेंगे. So next stitch में हम एक treble बनाएंगे. एक skip करेंगे, go into the next, make another treble, second treble, then again skip 1, go into the next, third treble, skip 1 stitch, go into the next, 4th treble, skip 1, go into the next, 5th treble, skip 1, go into the next, 7th treble, skip 1, go into the next, 8th treble, skip 1, go into the next, and 9th treble. Now in the next stitch we'll make a shell.
यहाँ पे हम शेल बनाएंगे, 5 trebles बनाएंगे एक ही स्टिच में, 1 2 3 4 and 5. Now in the next stitch again we have to make a shell. Next stitch में फिर से हम एक shell बनाएंगे, 1 2 2 3 4 and 5. Now again shells are done and we have to make this portion. So in the next stitch we'll make a treble, 1 skip 1 stitch, go into the next, second treble, skip 1 stitch, go into the next, third treble, skip 1 stitch, go into the next, fourth treble, skip 1 stitch, go into the next, fifth treble, skip 1 stitch, go into the next, seventh treble, skip 1 stitch, go into the next, 8th treble, skip 1 stitch, go into the next, 9th treble. Just count it once. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, this is 8th treble. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, one more. So we'll skip 1, go into the next, and 9th treble. Now in the next we have to make a shell. Now we are at the end. अब हम end में है तो हमें एक ही shell बनाना है. So we have to make sure at the beginning and at the end we have to make one shell, and in between we have to make two shells. So here we'll make a shell in the next stitch. So we'll make 5 trebles in one stitch, 2 3 4 and 5. Now in the next stitch we'll make a treble crochet stitch, and in the next make a treble crochet stitch again, and then in the last stitch here make a treble. So this is how it looks. Now the next row will be same as row 2, which will be one front post single crochet stitch in each of these following stitches. So we'll chain 1, turn our work, and we'll do one front post single crochet stitch in each of these following stitches. So just keep doing one front post single crochet stitch in each of these following stitches. ये जो जैसे हमने रो 2 किया था उसी तरीके से ये रो 4 होगी, जिसमें हम हर एक स्टिच में फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे, और इसी तरीके से आप रोज़ को रिपीट करते जाना, और जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा इसे बना सकते हैं. So I'll complete this row and then I'll show you how it looks. Now I've reached my last stitch, and in the last stitch I'll just go in to my last stitch and I'll make a single crochet stitch. So this is the back side and this is how it looks from the front side. तो इसी तरीके से ये दिखता है फ्रंट साइड से, ये बैक साइड है. एंड इसी तरीके से आपने रोज़ को कंप्लीट करते जाना है.
जैसे 1 and 2 रो है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे जैसे ये 3rd और 4th रो की है, इसी तरीके से आगे 5th और 6th, फिर 7, 8, इसी तरीके से आप रिपीट करते जाएंगे अगर ये 2 रोज़, तो ये बहुत खूबसूरती से उभर कर आएगा। मैं कुछ रोज़ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसा लगता है। तो देखिए कुछ रोज़ के बाद ये इस तरीके से दिखेगा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर अ कपल ऑफ रोज़। इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्टिच। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पूरा। ये देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ट्यूटोरियल। बस इसी तरीके से आपने ये दोनों रोज़ रिपीट करते जाना है जब तक आपको आपकी डिज़ायर्ड लेंथ नहीं मिल जाती। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप ट्रेबल्स वाली रो कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नीचे जैसे स्टिचेस में जहाँ पर शेल आ रही है, जितने स्टिचेस के बाद शेल आ रहा है उसी हिसाब से आपकी ऊपर वाली रोज़ भी होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये इस तरीके से जैसे दिख रहा है वैसे नहीं दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। सो बस इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है कि स्टिचेस बराबर हो, काउंट करते जाइएगा साथ साथ। ये जैसे ये बीच में 9 आनी चाहिए, शेल के बाद कोई गैप नहीं होगा, उसके बाद एक एक स्टिच में गैप होगा, एक एक स्टिच का। बस इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। सो आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल। जस्ट कीप रिपीटिंग द रोज, like 2 rows are repeating in this pattern. So I hope you liked it. So do like my video and do subscribe to my channel, and don't forget to click on the bell icon as you'll be notified whenever I upload my new video. Keep crocheting, stay happy, stay safe, bye bye.